Hello everyone, welcome all of you to the new video. So in this particular video, I'll be discussing about the answer writing. So how to frame a answer, how to write a answer in a particular or proper way so that you can get maximum mark in the GSI mains examination. Okay, and some of the theory associated with it so that it will clarify your all the concepts and you will understand what is the actual theory and the concept behind the question and all the theory associated with it. ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेंगे तो उसके हिसाब से हम theory and all those concept discuss करेंगे and also how to frame that particular answer of particular question. ठीक है, उसी क्वेश्चन का कैसे आंसर हमें लिखना है वो भी डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, लेट्स गो टू द सेशन. राइट, okay, so this is all about the geochemistry syllabus in the GSI mains examination. ठीक है, GSI main syllabus, this is paper 2 I think. Okay, in the paper 2 part. So this is the rare pattern. In this particular part I will be discussing the theory, concept and answer writing. ठीक है, पहले तो आपको थ्योरी जानना पड़ेगा ना, यू हैव टू गेन द नॉलेज फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद ही आप लोग फ्रेम करोगे कि कैसे लिखना है विद इन शॉर्ट, whether it is a short notes or whether it is a 10 mark question, whether it is a 15 mark question. Accordingly you have to write your answer. ठीक है, तो हम rare earth pattern and detail about rare earth element डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉट ओनली फॉर द GSI मेंस एग्जामिनेशन, इट इज ऑल्सो मच मोर इम्पोर्टेंट इन द गेट एग्जामिनेशन. ठीक है, गेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ऑल दोस रिलेटेड टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट कम्स इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, नेट के लिए भी उतना यूजफुल है एंड ऑल दो स्टेट एग्जामिनेशन जो स्टेट का जैसे मान लीजिए राजस्थान का होता है, गुजरात का होता है, राइट. सो ऑल दो स्टेट एग्जामिनेशन इज इम्पोर्टेंट. दिस रेयर अर्थ पैटर्न स्टेट का क्या होता है ना कि नॉर्मली फैक्ट बेस आता है फ्रॉम द रेयर अर्थ एलिमेंट, राइट, एज वेल एज इम्पोर्टेंट फॉर द असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन. ठीक है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड इसका जो क्वेश्चन आया था हम वही डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर शीट. हम लास्ट वीडियो पे डिस्कस किए थे क्वेश्चन कॉम आंसर बुकलेट. ओके, तो यही में आपको आंसर लिखना है. ओके, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है और आंसर भी लिखना है. सो दिस इज द क्वेश्चन. ओके, asked in the I think 2022 or 2021. प्लीज गो थ्रू दिस एंड सी इट. ठीक है, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब इसी तरीके से आप लोग 2 पेज में आप लोग लिखना है विद इन 2 पेज. ओके, दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज 10 मार्क अप्रोक्सीमेटली. ओके, लेट्स लाइक डिस्कस अबाउट सम ऑफ द पॉइंट or some of the theory and concept associated with the rare earth element. Then we will discuss कि कैसे आंसर आपको लिखना है, कैसे फ्रेम करना है, right? First read the question properly. First question is what are the rare earth elements? So this is the first part. Okay, so this is the first part. Okay, how does that concentration of rare earth change during magmatic fractionation? Okay, so when magmatic fractionation takes place, how the rare earth element behaves, right, or how the rare earth element behaves in crust or whether it is the mantle, right, and how that particular fractionation occur during the magmatic crystallization. ठीक है, and third part is the draw chondrite normalized rare earth patterns of calcium plagioclase and garnet. ठीक है, ये chondrite normalized rare earth pattern आपको draw करना है, not like pattern for the
डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट वर्सेस मिनरल और रॉक। ये जो प्लॉट है ये आपको नहीं ड्रॉ करना है, यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्मलाइज्ड पोर्शन ऑफ द रेयर अर्थ बटन। ओके, होप सो यू क्लियर इट द क्वेश्चन। ठीक है, पहले पार्ट पे रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ डज कंसंट्रेशन ऑफ रेयर अर्थ चेंज ओके ड्यूरिंग मैग्नेटिक फ्रैक्शनेशन, whether the concentration is gradually decreasing or whether the concentration is gradually increasing when magmatic fractionation occurs। ठीक है, and draw Conrad normalized rare earth pattern of calcic plagioclase and garnet। ठीक है, मैं अभी से बता रहा हूँ in near future, so this is a kind of literature based answer, right? Literature based answer। okay, and draw this is the diagram part। in near future you will see some of the advanced question, right? some of the advanced question, जैसे मान लो कोई प्लॉट दे दी आपको। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे है concentration of sample when it standardized with concentration of Conrad meteorite, यहाँ पे दे दिया आपका रेयर अर्थ एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सपोज कोई प्लॉट दे दिया आपको, सपोज ये गार्नेट प्लॉट है। ठीक है, और वेदर इट इज एपेटाइट प्लॉट ओके दे दिया आपको। सो दे पूछेगा आपको इनफर फ्रॉम दिस डायग्राम ओके, और एक्सप्लेन दिस डायग्राम और एक्सप्लेन द गार्नेट बिहेवियर okay, in different manner they can ask this particular question in near future। okay, in near future you will see some of the advanced type of question। okay, this is very basic type of question, basic type, you will see in near future definitely some of the advanced content। okay, let's go to the theory part। before that I already discuss about trace element। ठीक है, up to distribution coefficient last video, please go through that particular video। ठीक है, so that you can understand what is the major element, what is the minor element and what are the trace element। ठीक है, so rare earth element is a trace element। ठीक है, rare earth element is a trace element or you can say it is a lithophile element according to the Goldsmith। ठीक है, एक Goldsmith elemental classification है ना, please go through that। ठीक है, it is also in the syllabus part। ठीक है, so rare earth element is a trace element जो कि lithophile element है। ठीक है, major element क्या है, based on the different type of concentration and abundance in the earth crust, so this type of element differentiated based on the abundance in the rock। ठीक है, जैसे मेजर एलिमेंट इज ग्रेटर देन 1 वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज का मतलब क्या है होता है इन कंसंट्रेशन टर्म, इट इज 10,000 ppm पार्ट्स पर मिलियन। वेट परसेंटेज का मतलब यही होता है। सो बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन इट इज 10,000 ppm। ओके, सो माइनर एलिमेंट इट इज in between 0.1 to 1 watt percentage of rock। trace element less than 0.1% of rock, that is approximately less than 100 ppm। so इसका importance क्या है पता है, for the understanding of the petrogenesis or geochemical behavior of particular element। that's why we most of focus on the trace element part। ठीक है, all the major and minor element together make up nearly 100% weight। तो मेजॉरिटी है अर्थ क्रस्ट पे, so it is all the major and minor element and the trace element abundance is very few, right? so in any particular element can be major element in one rock। जैसे कोई भी particular rock पे कोई भी particular element वो major element हो सकता है, at the same time minor element हो सकता है in another type of rock। ठीक है, जैसे मान लो कि K in the granite is the major rock and minor element in another rock is K in basalt। element is same but the element behave in the different manner in different rock।
वो अलग ही बिहेव करता है इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, सेम एलिमेंट. ओके, सो ट्रेस एलिमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन द पार्ट्स पर मिलियन. आई ऑलरेडी डिस्कस पीपीएम पे वो मेजर रहता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. सो कॉमनली रेफर्ड एज पीपीएम इक्विवेलेंट टू ग्राम पर. डोंट गो थ्रू इट. So 1 weight percentage is 10,000 ppm. Always remember, right? So this is really really important. 1 weight percentage is equal to 10,000 ppm. ठीक है, जो कि because you know percentage is pph, parts per 100, right? So major element usually greater than 1%, जो कि SiO2, Al2O3, MgO, CaO, Na2O, जो कि अर्थ क्रस्ट पे abundance huge है, right? अर्थ क्रस्ट पे जो कि ऑक्साइड है वो अबंडेंस ज्यादा है, अबंडेंस इज हाई. ठीक है, माइनर एलिमेंट जो कि इन बिटवीन 0.1 to 1% है, इन बिटवीन, जो कि TaO2, MnO. सो दीज आर इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड, राइट? ऑक्साइड अबंडेंस, not the elemental abundance. Okay, so this is because whenever you analyze in the lab, okay, you have to measure in terms of oxide. All the concentration can be measured in terms of oxide in the lab, right? So जब हम ICP-MS वगैरह करते हैं, so you can interpret different type of concentration in terms of the oxide. ठीक है, and trace element usually less than 0.1%, जो कि rare earth element. So rare earth element is a kind of trace element. ठीक है, everything else is a trace element जिसका abundance बहुत कम है. ठीक, okay, let's go about and discuss about compatibility, okay, and incompatibility. जिसको भी पूछो आप कि what do you mean by compatible element and incompatible element, they only say it is like concentrated in the melt or solid. So this particular definition is only given by the many student. Element are concentration in the melt or it is fractionated in the melt. ठीक है, so all of the student like do not properly understand what is compatible, what is incompatible element. ठीक है, पहले तो ये बात है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है, it is concentration of the solid upon concentration of the liquid, that takes place is a huge role. ठीक है, जो कि huge role play करता है definitely, but thing is this is the compatibility. Okay, compatibility versus incompatibility. ये जो टर्म है ये बेस्ड ऑन द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, हाउ दे बिहेव. ओके, बेस्ड ऑन द chemical characteristic of element. Characteristic of element. ओके, पहली बात तो ये है. एंड ये जो compatible and incompatible element है, it goes to the crystal structure, right? How it will behave when it fit into the crystal structure, right? So that means I can write or I can say compatibility is the measurement with an element fits into the compatibility measurement of the behavior with an element that fits into the crystal structure. ठीक है, वो compatibility incompatibility मेजर करता है और compatible मेजर करता है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि whether you are compatible with your partner or not, whether your like psychological frequency matches with your father or matches with your mother or not. That means how much you are psychologically compatible and incompatible with your father frequency, right? Suppose this is you, this is your father, your father. So this is your mind, how much your mind frequency
is compatible with your father mind frequency. ठीक है, that is the compatibility, or that means that you fit into the father structure or not, or father mind or not. Are you getting my point? So this is compatible or incompatible. ये साइकोलॉजिकल लैंग्वेज पे समझा दिया आपको. So this is the proper definition. I can correlate. You can always read all those concepts associated with the real life. Real life को देखकर आपको concept समझना है और जानना है, right? So how you behave according to your father's mind, right? So that means how the particular element fits into the particular crystal structure, or how it will behave in a particular crystal structure, that determines the compatibility. Okay, let me write also sometimes. You can also take the screenshot also and write. Okay, let me add some more. And also always remember that element are concentrated in the melt is called the incompatible element, and compatible element is element are concentrated in the solid. ठीक है, ये solid पे और ये melt पे during the melting happens. Okay, this I can write also. जैसे मान लो अच्छे से समझना, ठीक है. Suppose this is the upper mental part. Okay, partial melting happens. Partial melting happens in the upper mental. How a particular element, or whether a particular element go into the melt phase or stays in the crystal structure. Stays in the crystal structure or solid or upper mental, it is solid, right? But when partial melting occur, it will give rise to the melt. ठीक है, and the melt will crystallize. The melt will crystallize to form the crust. है कि नहीं? ठीक है, ये upper mantle है जो कि solid है. When partial melting occurs, it will give rise to the melt, right? It will give rise to the melt, and this melt will crystallize to form the crust or continental crust. तो ये हो गया सॉलिड आपका. तो जैसे मान लो पर्टिकुलर एलिमेंट है, सपोज X इज द एलिमेंट, whether this element is go into the melt part, okay, or stays in the crystal structure or solid part, that will decided by the compatibility and incompatibility of the element. Are you getting my point? ठीक है. So most of the rare earth element, most of the rare earth element generally incompatible in nature. Generally incompatible in nature. Generally, ठीक है, incompatible in nature. That means distribution coefficient KD value जो है इसका less than 1 है. Okay, are you getting my point? Okay. So element are concentrated in the solid is called compatible. That means KD value is greater than 1 and KD value is less than 1 for the incompatible element. Okay, so are concentrated in the melt relative to the solid during either melting or crystallization happen. अभी बता दिया कि कैसे particular element वो solid crystal पे जाता है या फिर melt phase पे जाता है. That will determines the compatibility and incompatibility of element. जैसे मान लो कि RB है, Na है, K है, they can be major or trace element. ठीक है, and compatible element concentrate the solid relative to liquid during the melting and crystallization. ठीक है, and particular element वो भी compatible element हो सकता है किसी particular rock के साथ, and किसी element दूसरे compatible element incompatible element हो सकता है दूसरे rock के साथ. Okay, so we define the Nernst partition coefficient on distribution coefficient equal to Kd equal to concentration of the solid, concentration of an element, so CSI, concentration of particular element in the solid, और concentration of the element CLI. जैसे concentration कोई भी element है, I suppose element है, वो solid पे concentration कितना है और liquid पे concentration कितना है.
so that will determine by the KD value. ठीक है, for incompatible element अभी डिस्कस किए less than 1, for compatible element it is greater than 1 and KD equal to 1 अगर होगा element is neither of two, it is neither incompatible or compatible element, and KD अगर 0 हो जाए तो element is perfectly incompatible. Okay, so rare earth element, so this is all about rare earth element. You know, right, rare earth element is a, so this is the lanthanum series from La to Lu, so this is called lanthanide series and this is the actinide series. Actinide series. Okay, this is called lanthanide series. Sorry, I have to forget कि जो बताने वाला था मैं, let me add some here point जो कि आपको जानना है, why this is good into the melt phase and why it is stayed in the solid phase. Let's talk about compatible element. ये जो compatible element है, it will form the stable bond, right? So when it will form the stable bond, it will incorporate into the crystal structure, है ना? ये crystal structure इसीलिए जाता है compatible element, and also if the formation of the stable bond happens, it will immobile in nature, immobile, so that they do not go from the crystal structure to melt. इसीलिए वो माइग्रेट नहीं कर पाता फ्रॉम द क्रिस्टल स्ट्रक्चर टू द मेल्ट. दैट्स व्हाई द कंपैटिबल एलिमेंट गो इनटू द सॉलिड स्ट्रक्चर और कंसंट्रेशन in the solid phase, concentrated in the solid phase, whereas the incompatible element do not go into the crystal structure easily. Crystal structure easily, ठीक है. सो इसीलिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर से माइग्रेट कर जाते हैं. Crystal structure migrate from the crystal structure into the melt. Okay, that's why it is incompatible, and the compatible element is very much immobile, so that they don't migrate in from the crystal structure into the melt. तो इसीलिए ये concentrated कर जाते हैं solid पे, incompatible element concentrate कर जाते हैं liquid पे और melt phase पे. ठीक है, लेट्स गो. सो लैंथेनाइड अभी बता दिया, रेयर अर्थ एलिमेंट इज ए ट्रेस एलिमेंट. ठीक है, ये जो ट्रेस एलिमेंट है अभी बता दिया था मैं, ड्यू टू द, सो इट इज लार्ज आयनिक चार्ज, सॉरी नॉट लार्ज आयनिक रेडियस, हाई आयनिक चार्ज, राइट. आयनिक चार्ज ज्यादा हाई है रेयर अर्थ एलिमेंट का, जो नॉर्मली +3 है. +3 स्टेट पे ये रहते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे. ठीक है, एंड एक्सेप्ट सीरियम एंड यूरोपियम. इसलिए ये अनोमली दिखाता है, बिकॉज सीरियम इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन द +4 फॉर्म एंड यूरोपियम इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसीलिए वो अनोमली शो करते हैं. ठीक है, so it is large ionic radius and high ionic charge. ठीक है, नॉर्मली ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट पे रेयर अर्थ एलिमेंट का एनरिचमेंट ज्यादातर रहता है. ठीक है, एनरिचमेंट इन द क्रस्ट हम डिस्कस करेंगे क्यों ज्यादातर रेयर अर्थ एलिमेंट पे क्रस्ट पे रहता है. बिकॉज सी आई ऑलरेडी डिस्कस कि ये जो लैंथेनाइड सीरीज है La to Lu, ये रेयर अर्थ एलिमेंट है. सो दिस इज एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड, सो दिस इज नॉट द रेयर अर्थ एलिमेंट. La का एटॉमिक नंबर 57 होता है, Lu का 71 होता है. ऑलवेज रिमेंबर.
फ्रॉम द 57 to 71 एटॉमिक नंबर, रेयर अर्थ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 57 to 71, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये जो प्रोमेथियम ये देख रहे हो ना, ये दिस एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट नेचुरली, तो दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है फैक्ट बेस एंड असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट मीटेड गेट, 1 मार्क का गेट पे आ सकता है कि विच एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट नेचुरली, विच रेयर अर्थ एलिमेंट, दैट इज प्रोमेथियम, पीएम, ठीक है, प्रोमेथियम। ओके, so this is same as the periodic table. It is much more important when I will talk about basic geochemistry, then I will talk about the periodic table, the atomic radius, ionic charge, right? So I'll discuss about that. So lanthanide series, so this is lanthanide series, lanthanum, it is 57 atomic number, La to Lu, I already discussed, same hai, right? So La to Lu, so this is the rare earth element. And also sometimes yttrium is also associated with the rare earth element. Why? जिसका 39 है atomic number, yttrium, okay, yttrium is also associated sometimes, Re plus इसको भी जोड़ देते हैं, ओके। यहाँ पे 15 एलिमेंट है, अभी बताया था RE ऑलमोस्ट 15 एलिमेंट, ये याद रखना। ये नॉर्मली इंटरव्यू पे पूछता है हाउ मेनी एलिमेंट इंक्लूड्स द रेयर अर्थ एलिमेंट, इट इज 15 एलिमेंट, ओके। सो दैट इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, याद रखना। और La to Lu फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 to 71, ओके। लेट्स डिस्कस द कैसे लिखना है, ये जो क्वेश्चन बताया था ना। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द GSI मेंस क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं दिस फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर द रेयर अर्थ एलिमेंट, डिस्कस कर चुका हूं इन एन ब्रॉड मैनर, राइट। सो इंट्रोडक्शन आपको लिखना है कि कैसे लिखना है ये क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट योर आंसर विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रोवाइड द कंटेक्स्ट, राइट। सो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट आर द रेयर अर्थ एलिमेंट in a broad way, in an advanced way, right? So provide the context, state the main theme or topic of the question, main theme से debate मत होना, right? So rare earth element, the rare earth element, and always don't write ये जो the rare earth element, do not have to write, right? You can also write RE, RER, और यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं R से शुरू कर सकते हो, R amongst the most useful of all traces element for the evaluating wide range of process in igneous process, sedimentary process और metamorphic domain. मैं पहले से ही बता चुका हूँ, it is the characteristic for the petrogenesis part, right? Rare earth element or trace element is used or applied in the for the petrogenesis, for the understanding of the petrogenesis, okay. So evaluating wide range of process, be it igneous process, be it sedimentary, be it metamorphic processes, and also make an important contribution to cosmochemistry, की cosmochemistry के लिए भी ज़्यादा जानना चाहता है for the understanding of the meteorite, right? So that's why when we normally interpret the rare earth trend or rare earth pattern, okay, we normalize to chondrite meteor, ठीक है, chondrite और carbonaceous meteorite, ठीक है, इसीलिए हम normalize करते हैं, right? And rare earth element and also rare earth element and solar system का जो distribution है solar system, right? It will be in the same manner, हम आगे पढ़ेंगे, right? So rare earth comprise a coherent group of 15 element, बता चुका हूँ already. It is much more important. ये हिम्मत से याद रखना because many interview ask this type of question. This is very fact based, ठीक है। So there are 15 element and one more thing, promethium के बारे में, promethium doesn't exist naturally, ठीक है। Member of group 3 in the periodic table दिखाया था आपको। So lanthanum to lutetium, La to Lu,
जिसका एटॉमिक नंबर 57 to 71 है। दैट्स ऑल। नोन एज द लैंथेनाइट रेयर अर्थ, इसीलिए लैंथेनाइट सीरीज पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लैंथेनाइट रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। comprise the series of metal with atomic number 57 to 71, that is La to Lu. In addition, ये much more important point है, in addition the element yttrium, why is yttrium, yttrium जिसका atomic number 39 है, Z is equal to 39, has an ionic radius similar to that of the rare earth element. Re का जो ionic radius है, because you know right, Re का ionic radius ज्यादातर high है, ionic radius is very high, so yttrium का भी ionic radius high है, so that it fits into the structure, right, crystal structure, and that's why it's sometimes included with them, ठीक है। then rare earth element कितने टाइप होता है? light rare earth element LRE, heavy rare earth element HRE, middle rare earth element MRE, ठीक है। LRE, HRE and MRE का क्लासिफिकेशन कैसे होता है कि what is the difference between that? It is based on the atomic number only. The LRE element with low atomic number in the series, okay, let me, LRE का जो atomic number है वो generally low है, LRE का element with low atomic number in the series, heavy rare earth element का those with higher atomic number, and in between those the MRE, the middle member of the group from the Sm to Hu, right, samarium to holmium, okay, samarium to holmium are known as the MRE, ठीक है। are quite abundant in earth crust, अभी बताया था क्यों abundant मैं बताऊंगा, right, but they are dispersed in the low concentration and not commonly found in the concentrated deposit, ठीक है। इसका abundance कम है ज्यादातर, इसीलिए हम trace element बोलते हैं, and it will not commonly find in the concentrated type of ore deposit, okay, okay। इसको भी ना देखो, जैसे आपको लिखना है, राइट, यू हैव टू राइट, जैसे आप लोग रेयर अर्थ एलिमेंट लिख दिए, इसका डेफिनेशन वगैरह सारे लिख दिए, ये क्लासिफाई करके तो आप फ्लो चार्ट पे भी लिख सकते हो ना, देखो RE, LRE, MRE, it is divided into 3 types, right, ये यहाँ पे लिख दिया हाई एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लो एटॉमिक नंबर, डेफिनेशन हो गया है ना, ये इन बिटवीन मिडिल एटॉमिक नंबर, और इसका आप लोग लिख सकते हैं कि एलिमेंट, जैसे एग्जांपल हुए La to Nd, जैसे La हो गया, सीरियम हो गया, Pr हो गया, Nd हो गया, राइट, La, ये जो पार्ट है समारियम टू होल्मियम, सो इट इज होल्मियम, एंड ये पार्ट है कौन सा एलिमेंट, इर्बियम टू ल्यूटेटियम, सो इट इज इर्बियम, ये ल्यूटेटियम, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज मोर इनकम्पैटिबल इन नेचर, मोर इनकम्पैटिबल इन नेचर, ठीक है, मोर इनकम्पैटिबल, दैट इज मीन्स इनकम्पैटिबल इन नेचर, and this is less incompatible, that means compatible element. See, all those type of kind of theory that is more incompatible and less incompatible हम ज्यादा क्यों यूज करते हैं, बिकॉज रेयर अर्थ एलिमेंट एक इनकम्पैटिबल एलिमेंट है, not the compatible element, almost rare earth element are the incompatible element, that's why we normally using whether it is more incompatible or whether it's less incompatible, so less incompatible का मतलब क्या है, it is compatible, right, so that's why we are using whether it is a more incompatible or less incompatible, ठीक है। अभी मैं फिर से ऐड करता हूं so that I can give you a proper format, जैसे मान लो सपोज ये अपर मेंटल है, ये तो सॉलिड है आपको पता है, ओके,
When it undergoes partial melting, this melt will form, small melt will form. Okay, melt will form, and then this melt will accumulate. This melt will accumulate होके क्रिस्टलाइज होंगे, है कि नहीं? द मेल्ट विल crystallize to form the continental crust. ये सपोज हो गया आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ठीक है, अच्छे से समझना इसको, ठीक है, बिकॉज दिस इज मच इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंपैटिबल एंड इनकम्पैटिबल कॉन्सेप्ट ऑल्सो. जैसे मान लो ये जो एलिमेंट है, पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स, when it undergoes partial melting, this melt will go to the melt phase or not. ऐसे भी मत समझो, पहले आप बताओ कि whether the incompatible element or compatible element will go into the melt phase or कौन सा एलिमेंट मेल्ट फेज जाएगा, राइट? During the melting, incompatible element will go out. Incompatible element will go out into the melt phase, right? And compatible element will stay in the metal. देखो दो चीज है, right? Let me write. First point is incompatible element fractionated out from the upper mantle, क्योंकि incompatible element melt phase जाएंगे during the partial melting, right? When melting will happen, the incompatible element will go out into the melt phase or continental crust. Melt मतलब continental crust को, क्योंकि ultimately melt will finally accumulate and they will crystallize to form the continental crust. So incompatible element will go onto the continental crust. Are you getting my point? Okay. तो यहां पे क्या रहेंगे? Compatible element, right? Compatible element will stay in the solid phase or stay in the upper mantle, right? In this particular part there is compatible element, okay, and in the melt part there will be the incompatible element. ठीक है, तो मैं पहले से ही बता चुका हूं incompatible element, that means these are the LRE, right? So incompatible element will go out. That means the crust, the continental crust, is enriched in the LRE, right? And the upper mantle is depleted in the LRE. I'll discuss in a later part. Okay, हम discuss करेंगे, यही को stop करते हैं, हम discuss करेंगे. Okay, so this table is important part. Okay, so this is the rare earth RE table. So from the atomic number lanthanum 57 to 71, that is lutetium. In between, promethium doesn't exist naturally. This is much more important fact. This question you can get. Which element doesn't, or which rare earth element doesn't exist naturally? That is promethium. ठीक है? And lanthanum to niobium is called light rare earth element. From the samarium to holmium is called MRE. So this is MRE, this is LRE, and this is HRE. All those classification LRE, MRE and HRE based on the atomic number, whether the atomic number is the light or less, or whether the atomic number is more. Okay, then discuss about the chemistry of the RE. ठीक है, all rare earth elements are similar chemical and physical properties.
सेम जियोकेमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं. ओके, बिहेव एज द कोवेलेंट सीरीज. ऑल द टाइप ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट जो कि बिहेव सेम करते हैं इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इन टर्म्स ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, मैं बता चुका हूँ रेयर अर्थ एलिमेंट पेट्रोजेनेटिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रेस एलिमेंट इज द इंडिकेटर फॉर द अंडरस्टैंडिंग द पेट्रोजेनेसिस ऑफ द इग्नियस रॉक. ठीक है, सिमिलर जियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑल आर ट्राइवेलेंट. मैं बता ऑलरेडी चुका हूँ, ऑल आर द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट यूरोपियम एंड सेरिया. ठीक है, बिकॉज यू एग्जिस्ट बोथ इन द +2 फॉर्म एंड +3 फॉर्म, इसीलिए वो अनोमली शो करते हैं. Cerium exists in the +3 form and +4 form, right? So U both +2 and +3 form, and CE also exists in the +3 and +4. This arises that fact they all form the stable 3+ ion of similar size. Typically they substitute for the large major element, ठीक, जो कि substitute करते हैं Ce2+ के साथ. Because why substitute करते हैं? Because due to the similar ionic radius. मैं इसलिए बता चुका हूं, ड्यू टू द सेम आयनिक रेडियस द पर्टिकुलर एलिमेंट विल फिट इन द crystal structure. Okay, sorry to interrupt you, but I have to stop this video so that it will not much more longer. ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से डिस्कस करेंगे एंड हाउ विल इंटरप्रेट द रेयर अर्थ एटम or rare earth pattern and how this will affect during the fractionation, magnetic fractionation. I will discuss about that. Okay, hope so you like it. If you really like it and think that particular video adds some value in the examination, okay, please like it and share it with your friend. Okay, so that at least ki value de sako ki the amount of effort I am that putting in this particular relation. Okay, so hope so you really like it. In the next video I will discuss from the lanthanide contraction. Thank you so much.